माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय गंधर्विका गिरिधारी गौर हरि जय गंधर्विका गिरिधारी गौर हरि जय लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देव लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देव जय लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देव लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय निताय गौर सुंदर गौर हरि जय निताय गो सुंदर गौर हरि जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद
जय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। वो नहीं आया व्हाट्सएप किया था ना आपने। सो हमारे परम सौभाग्य है कि आज हिंदी ओके राइट, हिंदी बंगाली ओके। सो आज ये हमारा परम सौभाग्य है कि कार्तिक यू अंडरस्टैंड हिंदी इंग्लिश ओनली ओके आई मिक्स इट बिकॉज टू पीपल आर फ्रॉम बांग्लादेश एंड व्हाट अबाउट यू बोथ ऑफ यू अंडरस्टैंड हिंदी एंड इंग्लिश और एंड हिंदी ओनली। सो वी हैव वेरिड ऑडियंस. So it is said that transcendental vibration is so powerful that even if you don't understand the language, it still purifies. So आज पहले हम मंगलाचरण करेंगे क्योंकि ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि मंगलाचरण करने से by doing मंगलाचरण these prayers all the obstacles on the path of the success of Shravanam is ensured. So our acharyas have given this mangalaccharan and we should do this mangalaccharan. So I'll chant the Mangalacharan prayers. You can hear if you don't know the prayers, or else if you know, you can recite with me. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanshalakhya Chakshurunmitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeyam Shri Guru Shri Yatpadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagaranathanitam tam sajivam Sadvaitam Savdhutam Parijasaitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagaranathita Shri Vishakanitamscha Namo Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। So you understand English also to some degree? Okay. So it is my great fortune that I have been offered this service on this Kartik Ekadashi to speak something on Srimad Bhagavad Gita, which is Lord Krishna's words. And today is a very very auspicious day, the disappearance day, Tirubhav Tithi of Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, who is our Parama Guru. Guru of Srila Prabhupada is, who is the Guru of Srila Prabhupada? Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur. And who is Guru of Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur? Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. Sahil, come here. Come front. Rohit, you also come front. So, basically, we'll recite this Bhagavad Gita verse briefly and then we'll go ahead. Come on this side, that is ladies' side. Come this side. So, we have this verse from Bhagavad Gita, 17th chapter, 22nd verse. So, you can try repeating after me. Adeshakale yaddanam अपात्रेभ्यश्च दीयते अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदाहृतम् आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यः च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदाहृतम् आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यः च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदाहृतम्. So, word for word meaning Adesh, at an unpurified place, Kale, and unpurified time,
and unpurified yat yat that which that which danam danam charity charity apatrebhyah to apatrebhyam unworthy persons to unworthy cha persons cha also also diyate diyate is given is given asatkritam satkritam without respect without respect avagyatam avagyatam without proper attention without proper attention tat tat that that tamasam tamasam in the mood of darkness in the mode of darkness udahritam udhamritam is said to be. said to be Translation by Srila Prabhupada. And charity performed at an impure place at an improper time to unworthy persons or without proper attention and respect is said to be in the mode of ignorance. Repeat after me. And charity performed and charity performed at an impure place at an impure place at an improper time at an improper time to unworthy persons to unworthy person or without or without proper attention proper attention and respect and respect is said to be is said to be in the mode of dark ignorance. in the mode of ignorance. Purport by Srila Prabhupada. Contributions for indulgence in intoxication and gambling are not encouraged here. That sort of contribution is in the mode of ignorance. Such charity is not beneficial. Rather, sinful persons are encouraged. Similarly, if a person gives charity to a suitable person, but without respect and without attention, that sort of charity is also said to be in the mode of darkness. So now I will translate into Hindi and Bengali. I will try. I know little Bengali. So for her I will try. So यहाँ क्या कह रहे हैं श्रीला भगवद गीता का जो श्लोक है श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक अशुद्ध स्थान पर एक अनुचित समय पर और अयोग्य व्यक्ति को दिया हुआ दान और बिना उचित आदर सम्मान और ध्यान के बिना दिया हुआ दान तमोगुणी दान कहलाता है। ये श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि नशा करने जुआ खेलने के लिए जो दान दिए जाते हैं यहाँ पर उनको मना किया जा रहा है। उनको ऐसा कहा जा रहा है वैसा नहीं करना चाहिए हमें। उस तरह का दान तमोगुण में होता है। ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, अपितु बल्कि ऐसे दान के कारण जो पापी पुरुष हैं, पापी मनुष्य हैं, उनको प्रोत्साहन मिलता है। तो हमारे दान के कारण यदि पापी लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है तो हमें वैसा दान करने में क्या फायदा। उनको भी पाप लगेगा, उनके पाप का पूरा अंश हमारे पास भी सूद समेत ब्याज समेत आएगा। इसी प्रकार यदि एक व्यक्ति किसी उचित योग्य व्यक्ति को भी दान दे रहा है किंतु बिना उचित आदर सम्मान और बिना ध्यान के दान दे रहा है तो उस तरह के दान को भी तमोगुणी दान कहा गया है। तो ये श्लोक का अर्थ है। और मेरे मन में एक उदाहरण आ रहा है कि ट्रांसलेट इंग्लिश ऑल्सो। मेरे मन में इसका एक उदाहरण आ रहा है कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको एक व्यक्ति ने बहुत अधिक पैसा दान दिया था और एक बार वह व्यक्ति उनकी कक्षा में बैठा हुआ था और वह व्यक्ति बीच में बातें करने लगा। अभी गुरु कक्षा दे रहे हैं, वो भी कौन, सिंह गुरु, लॉयन गुरु श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कथा दीक्षित, राइट। और वह व्यक्ति उनकी उपस्थिति का ध्यान ना देते हुए, निरादर करते हुए आपस में बात कर रहे हैं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसको बहुत जोर से डांटा कि तुमने मुझे दान देकर मुझे खरीद नहीं लिया है। यदि आप वास्तव में गुरु के प्रति आसक्त हैं तो आप दान के ये नहीं सोचेंगे कि मैंने जो दान दिया तो गुरु पे एहसान किया। गुरुदेव अमार दान ग्रहण करे छेन, व्हाट डज दैट मीन, उसका क्या तात्पर्य है, तिनी हमारे कृपा करे छेन। गुरुदेव ने हमारे ऊपर कृपा की है दान ग्रहण करके। यदि हम गुरु महाराज को श्रील प्रभुपाद उनके इस आंदोलन में कुछ दान देते हैं तो हम कृष्ण के ऊपर, श्रील प्रभुपाद के ऊपर कोई एहसान नहीं करते। यह हमारे ऊपर विशेष कृपा है कि वो दान हमसे स्वीकार करके सही कार्य में लगाया जा रहा है, इसलिए हमारी उन्नति होगी। यदि हम इस भाव से दान देते हैं कि हम एहसान कर रहे हैं तो तुरंत वो दान तमोगुणी हो जाता है। उसी के लिए कहा गया बिना ध्यान के, विदाउट प्रॉपर अटेंशन, विदाउट प्रॉपर रिस्पेक्ट यदि हम दान देते हैं तो वो दान सही नहीं माना जाता। श्रील प्रभुपाद के पास जब कोई व्यक्ति दान लेके आता था और उस व्यक्ति का चरित्र या उस व्यक्ति की स्थिति उचित नहीं थी, यानी मान लीजिए वो कोई बहुत बड़ा भोगी रहा हो
या मान लीजिए वो व्यक्ति जो है वो अपराधी हो, कोई मतलब कोई राजनीतिज्ञ हो जिसका बैकग्राउंड जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहा हो, दैट पर्सन नॉट ए वेरी ऑनरेबल बैकग्राउंड, राइट? So the means of the charity is dubious. We don't know from where he has earned that money. Then that money, if we accept that charity, then that charity affects us also. Even if it is being given for Krishna's service. One example comes to my mind. You need water. आपको थोड़ा पानी चाहिए पीने के लिए, माता जी उनको थोड़ा पानी दो. She needs. ठीक है. So एक उदाहरण मेरे मस्तिष्क में आता है, मन में आता है कि एक भक्त थे, इस्कॉन के भक्त, शिला देवामृत स्वामी महाराज के द्वारा दीक्षित भक्त थे वो, और वो विदेश में कहीं नौकरी कर रहे थे, और वो जिस कंपनी में नौकरी कर रहे थे उस कंपनी में उनको गाय के वध के लिए, फॉर काउ स्लॉटर, सम सॉफ्टवेयर वाज टू बी मेड एंड ही वाज रिक्वेस्टेड टू असिस्ट इन दैट सॉफ्टवेयर मेकिंग. So he asked Guru and temple authorities, and temple authorities told them, you should not contribute in that, otherwise you'll get the karma. Ultimately that software will be utilized in for killing the cows. So then he said, okay, then he had to resign from his, or he rejected the project, and then he resigned from that job and he joined another job. And because of his rejection, that project went to some other company, and then they made a huge profit of that money, of that project, and then they got to know that this person rejected that project, that's why he got this project and we made a profit. So they brought a nice sum of money and brought it to him. Please accept this money, this check, because we got this project because of you. And he again was in a dilemma. What should I do? This money is coming to me despite my refusal. Now what should I do? So then he asked his temple authorities. So temple authorities said, okay, you accept that money, but that give that money 100% for deity services. 100% पैसा विग्रह की सेवा के लिए दे दीजिए जो आपको गलत स्रोत से प्राप्त हो रहा है. उसने वो सॉफ्टवेयर नहीं बनाया जिससे कि गाय का वध होता, दूसरे लोगों ने बनाया, लेकिन दूसरे लोगों को फायदा उसके कारण हुआ. तो वो पैसा जो है वो उसके पास थोड़ा सा भेंट के रूप में थोड़ा पैसा लेके आए. उसने बोला मैं क्या करूं, मेरे पास दिस सिंफुल मनी इज कमिंग टू मी. तो गुरु ने बोला, गुरु से डिस्कशन हुआ, बोला ये पूरा पैसा स्वीकार करो, 100% पैसा मंदिर में विग्रह की सेवा के लिए दे दो. श्रील प्रभुपाद के पास जब कुछ लक्ष्मी ऐसे ड्यूबियस सोर्सेस से कुछ पैसा मिलता, श्रील प्रभुपाद उसको स्वयं अपने हाथ में ग्रहण नहीं कर उसको हुंडी में डलवाते थे. श्रील प्रभुपाद তিনি एक शुद्ध महाभावत वैष्णव আছেন. শ্রীল প্রভুপাদ কর্মের বিচার নয়. মাতাজি আপনি বুঝলেন, আমি বাংলা বলছি এখানে. শ্রীল প্রভুপাদ শুদ্ধ মহাভাবত বৈষ্ণব আছেন, তিনি কর্মের বিচার নয়, বিচার আছেন. শ্রীল প্রভুপাদ কর্মের বিচার আছে. She is able to understand, or Bangladesh Bengali is little different. The accent is bit different Okay. than ours. Understand. So Srila Prabhupada used to give that money for hundi. If you keep in hundi, then it is between you and Krishna, no karma factor, right? But if you are accepting some money and you are directly using it in some service, right, then it is little difficult. So Srila Prabhupada is completely independent. He is Swarat like Krishna in the sense because he is a pure devotee of Krishna. Just to show us for an example, he did that, right? So what's the time now? 7:15. Okay, we have 15 minutes. So today Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj Tirobhav Tithi. So I briefly described this Bhagavad Gita verse. मैंने संक्षेप में इस भगवद गीता श्लोक के बारे में कहा है, और मुझे एक और उदाहरण याद आता है. चूँकि भागवत पे बैठा, व्यासासन पे बैठा हूँ तो मुँह से सत्य ही निकलेगा, और मैं क्षमा चाहता हूँ माता जी से भी. ऐसा कहा गया है, बहुत सुंदर दो कथाएं सुनाऊंगा इससे रिलेटेड. एक बार क्या हुआ, मेरे शिक्षा गुरु श्री राधे श्याम प्रभु वो मुझे बताते हैं कि कुछ भक्त जो हैं वो भागवतम कक्षा में हाथ में माला लेके बैठते हैं. एक कान से वो हरे कृष्ण महामंत्र के अपने 16 माला पूरे करते, दूसरे कान से भागवत का कथा सुनते हैं. ना तो कृष्ण की 16 माला स्वीकार करते हैं और ना ही उनका कथा सुनना स्वीकार किया जाता है. राइट? क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि जब हम कृष्ण के नाम का जप कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं?
हम कृष्ण को इनवाइट कर रहे हैं, आइए प्लीज कम, वी आर वेटिंग फॉर यू, एंड वी आर इनवाइटिंग दैट गेस्ट. And during that activity, if you do something else, what we are actually doing, we are just closing the door and running away from the window. Now that guest has come on the door. How will that guest feel? Right? परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते थे कि जिस समय आप विग्रह पूजा कर रहे हैं, क्या विग्रह पूजा के समय आप कोई और कार्य करते हैं? कोई और कार्य नहीं करते ना. तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जब ये विग्रह पूजा के समान है, तो या तो विग्रह पूजा यानी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, कथा सुनिए, दोनों काम एक साथ करना अच्छा नहीं है. राइट? एक समय में एक ही चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए. हाँ, शास्त्र में ऐसा भी कहा गया, यदि आप विग्रह पूजा कर रहे हैं और मंदिर में कोई अतिथि आ जाए, अतिथि शब्द का ही मतलब है अतिथि, जो बिना किसी तिथि के अचानक से आ जाए, तो उस समय यदि मंदिर में और कोई भी व्यक्ति नहीं है उसका स्वागत करने के, तो विग्रह पूजा बीच में रोक करके उसका स्वागत कर सकते हैं. ऐसा श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं श्री भक्ति रसामृत सिंधु में. तो एक कथा आती है मेरे मस्तिष्क में, ऑफ कोर्स मैंने कहा ऐसा, बट एक और कथा आती है. हमारे एक आचार्य में जिनका नाम है गोपाल चक्रवर्ती का करके एक व्यक्ति में, शायद आपने नाम सुना हो. तो उन्होंने श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध किया था, और श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध करने के कारण उनको कुष्ठ रोग हो गया था. She got leprosy because he got leprosy because he offended Srivas Thakur. He tried to defame Srivas Thakur and he got leprosy. And then Chaitanya Mahaprabhu was walking on the bank of Ganges and he begged forgiveness. And Chaitanya Mahaprabhu understood. He is begging forgiveness only because of his suffering. He doesn't internally feel that I have offended Vaishnava, it's such a bad thing. Just because he is suffering badly, he begged forgiveness. So Chaitanya Mahaprabhu told, go and beg forgiveness to Srivas Thakur. And he went and begged forgiveness to Srivas Thakur also, but his heart was not purified. And later this person, Devaki Nandan Thakur, later his name became Devaki Nandan Thakur. And Devaki Nandan Thakur, he went, and I believe he went and took Diksha from another Mahabhagavat. And then he was told, from the tongue you have defamed the Vaishnavas, from the same tongue you should glorify all the Vaishnavas. And he has written a beautiful Vaishnava song, you might be knowing. Vrindavan vasi jata Mahaprabhur gana, Pratama vandan kari tar charan, Navadip vasi jata Mahaprabhur gana. Like that, he has written an entire song, an entire poem, big poem. And from that, in that poem, he has glorified all the Vaishnavas of his time. Right? So that is how from the mouth, and it is our general tendency to criticize the Vaishnavas. Because when we come to bhakti, it is our general tendency to criticize. Because that is what I have been at least doing all my life in this life and in my previous lives also. So now, when we come to bhakti, same tendency remains. But same tendency is very, very detrimental for our devotional service. तो वैष्णव की यदि निंदा करेंगे तो उसको प्रथम नाम अपराध कहा गया है. जिन वैष्णव ने अपना जीवन भगवान के गुणगान के लिए समर्पित कर दिया है, ऐसे वैष्णव की निंदा जो है वो घोर अपराध है. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. मेरे गुरु महाराज एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए दो व्यक्ति गंदे हो गए हैं. टू पीपल आर वेरी वेरी डर्टी, दे आर मडी, एंड बोथ ऑफ देम स्टैंडिंग अंडर शावर. एंड बोथ ऑफ देम आर टेकिंग बाथ. दोनों स्नान कर रहे हैं. One person is less dirty, other person is more dirty. So the person who is less dirty is getting clean faster, and one who is more dirty is getting clean slower. Does it mean that person who is more dirty and the person who is less dirty, he can criticize the person who is more dirty? No, he is standing in the shower. He will become clean in some time. He might be having some dirt right now. He'll become clean. So not the business of less dirty person to criticize more dirty person. That is our situation. When we do some Vaishnava Ninda, when we criticize some Vaishnava, that is exactly what we are doing. That's what? This is considered a bad thing. It's called fault finding, Chidranmeshan in Bhagavad Gita. Krishna says. And Krishna says this Chidra Anmeshan, finding the faults with Vaishnavas and faults with anyone. Each and every living entity is a part and parcel of Krishna, and they are all Vaishnavas. Every person is a Vaishnava. Especially those who are chanting Krishna's name, they are Vaishnavas. Should be careful not to offend. Now, coming to
the greatness and holiness of Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj means, of course, I am thoroughly unqualified even to speak and even to sit and speak on this Vyasasana. It is my, because I am given this service, as a service I am trying to do. All of you know more than me, all of you are better than me, and from the core of my heart I touch mentally each of yours lotus feet in my mind, and then I am trying to speak something for the pleasure of Guru and Krishna and for the glorification of Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. So Babaji Maharaj, he was born in Bangladesh, and he was in Grahast Ashram there with his wife, and very nicely he followed Grahast Ashram with complete attention on Krishna. And once when his wife left the body, then he came to Vrindavan Dham, and he treated each and Vrindavan Dhamvasi as Mahabhagat great souls with great attention, love and care. He worshipped each and every Vrindavan Vasi, and he served all the Vrindavan Vasis there in Vrindavan Dham. For more than 30 years he resided in Vrindavan Dham. After coming from Bangladesh, more than 30 years he resided there. There is a great Vaishnava in our parampara, our Param Guru, Srila Jagannath Das Babaji Maharaj, and he took Diksha from one of the disciples of Srila Jagannath Das Babaji Maharaj, Srila Bhagavad Das Babaji Maharaj. And Gaur Kishore Das Babaji Maharaj was complete. He is, I used wrong, but he is, because he is still not present with us through his holy association and blessing. So he is such a great, such a pure Vaishnava that he had absolutely no concern for material things. Absolutely Virakta Babaji. He was so humble that he is considered Vairagya Murti. He had absolutely no concern for Dhanam, Janam, all these things. No material inclination. No material inclination is wrong, but he had nothing to do with material world. So he was so detached that he did not want to accept even a single disciple. He had not accepted even a single disciple. Only one disciple he had accepted. Who is that one disciple? Who is that only disciple? एकमात्र शिष्य जो गौर किशोर दास बाबाजी महाराज ने स्वीकार किए, कौन है वो? हमारे प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद। उन्होंने एक शिष्य को स्वीकार किया, उस एक शिष्य ने पूरे संसार में भगवत भक्ति का प्रचार करने के लिए स्वयं सरस्वती ठाकुर ने पूरे भारत में 64 बॉडी मठ स्थापित किए, और श्रीला प्रभुपाद को 1933 में उन्होंने आदेश दिया कि पूरे विश्व में आप भगवत भक्ति का प्रचार करिए। सो दिस इज द पावर ऑफ वन डिवोटी। एंड गौर किशोर दास बाबाजी महाराज इतने विनम्र थे कि वो स्वयं के शिष्य को पहली बात तो दीक्षा देना नहीं चाहते थे। तो जब सरस्वती ठाकुर उनके पास दीक्षा के लिए गए, और उनको किसने कहा? सरस्वती ठाकुर के पिताजी श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने उनसे कहा कि तुम गौर किशोर दास बाबाजी महाराज से दीक्षा दो। और गौर किशोर दास बाबाजी महाराज श्री भक्ति विनोद ठाकुर को अपना वरिष्ठ वैष्णव मानते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उनसे कहा आप किससे दीक्षा लीजिए? गौर किशोर दास बाबाजी महाराज से। जब सरस्वती ठाकुर के पास दीक्षा के लिए गए तो गौर किशोर दास बाबाजी महाराज ने बोला मैं दीक्षा नहीं देना चाहता, मैं दीक्षा किसी को नहीं देता। तो सरस्वती ठाकुर ने उनके चरणों में बहुत अनुनय विनय किया। तो सरस्वती ठाकुर को उन्होंने कहा ठीक है, तुम जाओ, मैं चैतन्य महाप्रभु से पूछूंगा, अगर चैतन्य महाप्रभु बोलेंगे तुमको दीक्षा दूंगा, ऐसा कहा जाता है। तो देन अगेन सरस्वती ठाकुर अप्रोच्ड हिम दैट प्लीज गिव मी दीक्षा। देन ही सेड आई फॉरगॉट टू आस्क लॉर्ड चैतन्य, मैं भूल गया चैतन्य महाप्रभु से पूछना। तो सरस्वती ठाकुर बिकेम मोर desperate. And Saraswati Thakur was such a great scholar. He has written a commentary on Surya Siddhanta, which is a very difficult Sanskrit book, and no one could write that commentary. And he was offered the post of the head of Department of Astrology in Calcutta University, and it was a very esteemed post. But then he rejected that. He left all his astrology to become pure devotee of Krishna and fulfill the mission of his life. So Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, second time he rejected, third time again he went, and this time with so much, you can say, so much pain, so much humility, he begged,
See, your mercy is the only living force for my life. If you don't give me your mercy, I am willing to give up my life. That's what it is said, that he was so desperate to take Diksha from Mahabharata. Like we say, na, Krishna se tomar, Krishna dite paro, tomar shakati ache. Amita Kangala, Krishna Krishna boli, Bhai Tavata pache pache. Right? This song comes. Oh Vaishnav Thakur, if you don't give me your mercy, then my life is useless. Right? This also comes like, and if you don't give me your mercy, then I am willing to give up my life. Right? In Narottam Das Thakur song also it comes. Pashani Kutibo Matha, Anale Pashibo, Gorangar Kotha Gile Pabo, Gudiridi Kotha Gile Pabo. In the with Vaishnavas, when we feel vira from the Vaishnavas, we simply feel that I'll give up my life. I'll just push my head against a big chattan, big rock, and I'll just kill myself. I'll enter the fire because I'm not getting Vaishnavas mercy, Vaishnavas association. So that humility Sri Thakur approached, and then Gaur Kishore Das Babaji Maharaj agreed, and he accepted only this one disciple. And then he gave 3 instructions to Srila Saraswati Thakur. I don't know whether I remember that or not. I have heard it from my Guru Maharaj. First instruction, one instruction he gave: never go to Calcutta. Because Calcutta is a Vishayi place. Never go to Calcutta. Right? Now, Sri Thakur, he came to Calcutta and he did his prachar in Calcutta. Recently I was in Ulta Danga. I was in Mayapur, and I have been to this place, Ulta Danga Junction. That is the place where Srila Prabhupada first time met Srila Saraswati Thakur in 1922. And he got the instruction that you are an educated young man, please go and do the prachar of Hare Krishna Mahamantra in English language, Chaitanya Mahaprabhu Shiksha in English language to the foreign words. So that place Ulta Danga, that was the first Gaudiya established. Right? And from there the prachar happened. So Saraswati Thakur came to Calcutta. So what does it mean? Is Saraswati Thakur not following the order of his Guru? The internal esoteric meaning is that Saraswati Thakur, he did his tapasya, he chanted 1 billion Hare Krishna, 1 billion holy names, Harinam he took, Shat Koti Harinam he took, he chanted in Sri Mayapur Dham. And after that he went to his Guru Maharaj, Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, and said that I want to go for prachar. And Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, who is such a humble Vaishnava, he put his 2 lotus feet on the head of Srila Saraswati Thakur and gave him all his blessings. And then he came to Calcutta. So he never came in the association of Kolkata's Vishayi nature. He simply came and gave his association to Kolkata. So he never came in the contact of city Kolkata, which is Vishayi, Ghor Vishayi. But he brought Mahaprabhu in his heart and Hare Krishna Mahamantra in his heart, and he just gave that association. So that is the meaning of coming to Calcutta in his case. So Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj is such a Virakta Vaishnava that once one rich person came, and rich person in the sense that person was a very, very, you can say, humble Vaishnava, and he offered that you please come in my home. My home is in Navdeep only. I have made a bhajan kutir. You can come and give your bhajan there, do your bhajan there. So he said, okay, give me a toilet in your home. I will do my bhajan in toilet. So that Vaishnava was shocked. But he said, no, please come, do bhajan in my some bhajan kutir. But he insisted, no, give me a toilet, I'll do it there. And then that person was helpless and speechless. So he cleaned that toilet very nicely, and then he gave it to Babaji Maharaj. And then Babaji Maharaj sat in that toilet and he did his bhajan Hare Krishna Mahamantra. We may wonder what he is doing. But actually what he did, in toilet no one will come to disturb him. No one will come to know that he is there. So he can chant his Hare Krishna Mahamantra japa without any disturbance. So such is the purity, such great souls, wherever they go, they can make the place pure. So to such our Param Guru Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj,
we pay our humble obeisances. I'll say his pranati mantra in the end of this class. Please repeat after me. Namo Gaur Kishoraya Namo Gaur Kishoraya Sakshat Vairagya Murtaye. Sakshat Vairagya Murti. What is the meaning? I pay my pranams to Gaur Kishordas Babaji Maharaj, who is a personification of Vairagya. Vipralambra Sambodhe. He is an ocean of Vipralamba Bhav. That means separation from Krishna. Padambojayate Namaha. Pujayate Namah. I do pranam at his lotus feet. So he is an ocean of. And after passing 30 years in Sri Vrindavan Dham, Babaji Maharaj went to Navdeep Dham, and by the mercy of Sri Krishna, Radha Krishna on their order, and he stayed there in Navdeep Dham. And there is big story how his samadhi was made there. But his samadhi is there in Sri Chaitanya Math in Sri Navdeep Dham. And recently I was there in that samadhi mandir of Babaji Maharaj, and I chanted and took his darshan in his association. So I will like to stop here. Now it is time for Damodar Ashtakam. And यदस्खलितं किंचित् विद्वां संपूर्य अंतुतत् यदत् सौष्ठवं किंचित् सद्गुरोर एव मे नहि. Whatever I spoke, if you liked anything, then if that belongs to my guru, because I have no qualification. Whatever was not pleasing to your heart and whatever you did not like, whatever hurt you, that is actually my fault. So you are all knowledgeable people and you can correct that. With this prayer, I bow down at each one of your face. Vanchakaltrubhyascha kripa sindhubhyo cha Aritanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, कृष्ण प्रभुपाद की जय, कार्तिक एकादशी तिथि महामहोत्सव की जय, श्री गौर किशोर दास बाबाजी महाराज की जय, गौर प्रेमानंद।